चलो लेट्स स्टार्ट देन। बाकी सब बात ज्यादा ऑनलाइन है क्या? एलिवेटर पिच का क्या बोला सर ने कल? लिंक भेज दिया है। टेक्निकल एनालिसिस। उसका टारगेट 70 है प्रोबेबली। Today we are going for voluntary actions, reference data management and stock lending and borrowing, 3 topics. Okay, at a stretch अगर हो सके तो खत्म कर देते हैं, ठीक है? तो बीच में ब्रेक वगैरह आज नहीं लेते हैं. By 12:30 we will try to finish. Okay. क्या है बाकी? फिर भी 4, 7, 10 और ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से 2, 4, 5, 15 लोग. बाकी क्या इंटरव्यू है किसी का? नहीं तो कल तो ज्यादा स्ट्रेंथ था शायद, है ना? सॉफ्ट स्किल्स के 2-3 लेक्चर और रख दूं क्या? हाँ हाँ, नेक्स्ट वीक में एक तो होगा, दैट्स फॉर श्योर. कुछ क्या कुछ टास्क दिया है? एलिवेटर पिच एक ही और एनीथिंग? वन बाय वन. हाँ अच्छा, वर्कबुक. ओके, अच्छा वो सब पर्सनल एनालिसिस वाला. हाँ देन बस वही एक था. ओके, वर्कबुक फिलिंग इज स्टिल इजी बट व्हाट आई फील इज आपका मतलब जब 1-to-1 communication, personal approach to, like when you are going for public speaking or when you are going for the interview, at that time your body language, confidence, all those skills are important. तो कैसे escalate थोड़ा करें? 10-20% एक boost चाहिए आप लोगों में. That is what I am feeling. Because if you are strong in domain knowledge, then मुझे नहीं लग रहा है. Because what I am expecting, जैसे उस दिन बोला था, at least 15 should be anyhow cracking the interviews. If आपका मई से मतलब स्टार्ट हो जाता है, once your level 2 mocks are completed, ठीक है? फिर level 3 में तो let's see, अगर ऐसा होगा तो जल्दी खत्म कर देंगे. टॉपिक्स इतने हैं नहीं, फिर तो ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स का ही है. आपका थोड़ा पेंडिंग रहेगा ना, बहुत है. आपका मॉक्स कब दोगे आप? कल मॉक्स? अच्छा, आपका शेड्यूल हो गया ना सैटरडे वाला? करेक्ट. प्रिपरेशंस डन? किसी को भी जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछता हूँ ऐसे ही रिस्पॉन्स आता है. क्या है? यस नो बीच में है? ओके चलो. So let's start with the voluntary corporate actions. We were वहाँ पे रुके थे. So of course voluntary corporate actions are not mandatory in nature. You need to make sure that the given top level management will be either mandatory informing their shareholders or stakeholders, or they might not. A response is required by the corporation to process the given action. Say for example tender offer. So sometimes tender offers are sometimes provided wherein not all the shareholders are required to compulsory go for such offers. They can surrender or they can surrender their shares. There's a buyback hota hai. Okay, so it's not mandatory. If you are holding the shares, it's not mandatory for you to sell those shares.
ठीक है, भले TCS ने 4,500 पे बोला था कि we will be giving it to you, but if you want to keep it for a long time, you can keep it. A corporation may request the shareholders to tender their shares at a predetermined price. The shareholder may or may not participate in this tender offer. Okay. Shareholders sends their responses to the corporate agents, and the corporations will send the proceeds of the exchange to the shareholders who elect to participate. Sometimes a voluntary corporate action may give the option of how to get the proceeds of the given action. So for example, stock dividend option या cash options है, तो shareholder can elect to take the proceeds of the dividend either as cash or in terms of voluntary actions, it can include rights issue, making buyback offers or something else. But it's not always important that you should always go for the offer. अगर बायबैक अच्छी कंपनी करती है ना, से फॉर एग्जांपल आई थिंक वेदांता का मैंने 4 बार देखा हुआ है, TCS का भी, नेवर एवर सरेंडर योर शेयर्स. ओके, फ्यूचर भले 3 महीने 6 महीने 1 साल, वो जो बायबैक ऑफर होता है वो कम से कम उससे 500,000 पॉइंट आगे चला जाता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न. रिगार्डिंग हाँ राइट, नहीं सी देयर विल बी एन ऑप्शन कमिंग ओवर हियर. से फॉर एग्जांपल इन जीरोधा वहां पे एक ऑप्शन रहेगा वेदर यू वांट टू गो फॉर द बायबैक ऑफर और नॉट. कॉर्पोरेट इवेंट्स करके एक आता है जीरोधा में. ओके, एक टैग है वहां पे क्लिक करोगे एंड इफ यू आर हैविंग TCS शेयर्स, सो इफ यू वांट टू सरेंडर देन ओनली यू कैन सरेंडर. इट्स नॉट मैंडेटरी. हाँ, लेकिन आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, वो इवेंट लिख के आता है ऊपर फॉर एनी टाइप ऑफ शेयर्स इन जीरोधा. आई डोंट नो अबाउट अदर स्टॉक, मतलब प्लेटफॉर्म्स अपस्टॉक्स में कैसे होता है, या फिर कौन सा कोई और कौन सा यूज कर रहे हैं. एंजल, आई डोंट नो, एंजल में कुछ आता है मेल वगैरह या समथिंग नोटिफिकेशंस. नोटिफिकेशन कुछ नहीं आता नो. HDFC में भी नहीं आता है. रिगार्डिंग बायबैक भी नहीं था TCS का. ठीक है, आना चाहिए. एंजल का रिजल्ट देखा किसी ने अभी? परसों था और शूटअप हुआ जो कल. व्हाट वाज द नेट प्रॉफिट? 100 करोड़ से डायरेक्टली जंप टू 200 CR. IPO प्राइस था 335, कल टच हो गया वो 1800 ऑलमोस्ट. 6 times the IPO price in 2 years. हाँ, नहीं लोअर सर्किट आई डोंट रिमेम्बर, लॉस में था वो पता था. आई डोंट रिमेम्बर वेदर इट वाज इन लोअर सर्किट. हाँ, देन ऑल ऑफ अ सडन टर्न अराउंड स्टोरी 2 साल में 6 times. ठीक है, तो सेम हैज टू बी रेप्लिकेटेड आई थिंक. सी इवन इन ऑल दिस स्टॉक्स NS, GSC, CDSL, see these are never ending going stories. So why every year number of subscribers are going to now that base is going to grow more, right? तो उनका भी काम बढ़ेगा, तो obviously their properties is going to increase steadily. जो जिनको वो बोलते हैं ना कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला स्टॉक चाहिए, तो CDSL BSE बेस्ट है उसमें, बिकॉज आपका मार्केट कभी बंद नहीं होने वाला है और CDSL कभी बंद नहीं होने वाला है. द सेम इज द स्टोरी फॉर IRCTC. ओके, बिकॉज जस्ट इमेजिन व्हेनेवर, अभी तो एक बुलेट ट्रेन के लिए और एक 3-4 मेट्रो के लिए मतलब इतना शेयर्स घूम रहे हैं. ठीक है, जस्ट इमेजिन इन द फ्यूचर, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म की बात है, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस स्टॉक्स विल बी मेंट एट दैट टाइम आफ्टर 10 years 15 years, जब मतलब अपने पास 30-35 मेट्रो हो जाए, 4-5 बुलेट ट्रेन हो जाए, तो द ग्रोथ ऑफ दैट रेलवे इंडस्ट्री ड्यूरिंग दैट टाइम इज गोइंग टू बी ह्यूज. ओके, एंड ऑफ कोर्स वी डोंट नो द पोटेंशियल ऑफ दिस ग्रीन एनर्जी. अदानी का मैंने एक पोस्ट किया था रिसेंटली, तो somehow he's working on this hydrogen. वो पड़ा है तो अंबानी भी आ रहा है पीछे पीछे, तो उसका स्टॉक उसने पूरा कल निफ्टी देखा कैसे खींचा. Did anyone track the market yesterday? सिर्फ Reliance, we had seen that heat map, right? If anyone remembers that, तो अकेले वो Reliance was pulling the Nifty over there. None another stocks in that Nifty 50 where too much of heavyweights were taking that thing. But just because one news came that he's now focusing more on all these energy sources, अब जब स्टार्ट करे तब ठीक है, तब तक तो ये सब स्टोरी टेलिंग जैसे ही लगता है. जियो प्लेटफॉर्म्स का भी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था, RMN को आ रहा था. ठीक है, फेसबुक वगैरह ने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है, बट वी नेवर नो व्हेन एक्चुअली रिलायंस इज गोइंग टू स्टार्ट एक्चुअली एट ऑपरेशनल लेवल, राइट? RMN को पता है ना कि नहीं है? नो आइडिया. RMN को नहीं पता है? सऊदी की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कंपनी. ओके, तो दैट एक्चुअली उसका बोर्ड मेंबर वाज गोइंग टू गेट इनटू द रिलायंस बोर्ड. तो वो भी बहुत लंबा स्टोरी चला था उसका. बट एनीवेज, वो फिर अपनी जगह पे वापस. Okay, now the tender offer we have seen that in that case is a public offer by an acquirer to all the stockholders of a publicly traded corporation to tender their stocks for sale at a specified price during a specified time. So for example, buyback. Buyback का we have already seen that 4 different dates, record date, X date, bonus date, वो सब देख लिया था, right? So in tender offers,
The bidder contacts shareholders directly, inviting them to sell their shares at an offer price. Tender offer is a corporate finance term denoting a type of takeover bid. So आप आपका surrender कर दोगे तो आपको वो takeover ही कर रहे हैं, ठीक है? To induce the shareholders of the target company to sell, the acquirer's offer price usually includes a premium over the current market price. Why? Because TCS का when the buyback was announced, 35, 3600 चल रहा था. Premium amount paid was 4500. So per share you are going to get around 800, 900 rupees of profit. लेकिन वहां पे कैच किया था कि से फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू हैव 10 शेयर्स, नॉट ऑल द 10 शेयर्स आर गोइंग फॉर द बायबैक. वो रेशियो आएगा वापस उसमें भी, आइदर 3 शेयर मतलब 1:10, 2:10 आउट उस टाइप हो जाएगा. तो अगर 3 शेयर्स ही सरेंडर, हाँ बाकी के 7 शेयर्स विल बी एट योर करंट मार्केट प्राइस. बट इफ यू आर गोइंग टू हैव ह्यूज क्वांटिटीज, तो लोगों ने क्या किया था, मतलब बहुत मल्टीपल एप्लीकेशंस कर दिए थे. लाइक फॉर एवरी फैमिली मेंबर दे स्टार्टेड डूइंग द एप्लीकेशंस फॉर बाय. तो अगर दो दो शेयर्स भी देते हैं तो कुल मिला के कुछ 10 एप्लीकेशन है, तो 20 शेयर्स का डायरेक्टली बेनिफिट कितना होगा, 800 रुपीज पर शेयर अप्रोक्स. तो 800 इंटू 20 हाउ मच, 16,000. और कुछ तो करना नहीं था उनको, बाकी के टीसीएस के शेयर्स ऐसे ही रहते हैं और 16,000 का डायरेक्ट बेनिफिट. ओके. Then comes the rights issue, a security giving stockholders entitlement to purchase new shares which are issued by the corporation at a predetermined price, but it is normally less than the current market price. Why? Because वो आपको फ्री में दे रहे हैं. राइट्स इशू इसलिए है सो दैट यू आर शोइंग योर लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंपनी. प्लीज रिमेंबर, अगर बायबैक है तो बायबैक हमेशा लार्जर प्राइस पे होगा कंपेयर टू द करंट मार्केट प्राइस, और राइट्स इशू है it will be less than the current market price, so don't exchange it. The entitlement is in proportion to the number of shares that have been already owned. Rights are issued only for a short period of time, after which they expire, and it is known as also known as subscription rights. So just write one definition of rights issue and write the comparison between rights issue and buyback. Okay. Online students able to hear me, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Write this definition of rights issue. Okay, this one. Also, it is known as subscription rights. And then write rights issue price are normally less than the current market price. But for the buyback, it is higher than the current market price.
Right, everyone? Okay. अदानी पोर्ट का टर्न आना चाहिए 1000 ग्राम. उसका भी कुछ कोलैबोरेशन का न्यूज़ था. Anyone regarding? अच्छा हाँ, यूके मिनिस्टर को ही मिल लिया डायरेक्टली कल तो. अच्छा. अहमदाबाद में जाके मिल के आए. अच्छा. पब्लिसिटी की हद होती है. बट आई थिंक ही विल बी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट, अदरवाइज वो आते नहीं है. यूके वाले तो डेफिनेटली आते हैं, और कोई आए या ना आए. यूरोप से फिर भी जर्मनी, इटली, फ्रांस आर स्टिल गुड if they really want to invest, but from UK it's very difficult. हाँ, ओशन मरीन पार्क या समथिंग लाइक दैट. उनका वो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि गुजरात पे जिस हिसाब से उनका बेस है, स्पेसिफिकली मुंद्रा पोर्ट. आई डोंट नो लाइक हाउ दे, बिकॉज रिलायंस का वहीं पे they are going to lose the competition. Why? Because that oil refinery business, I don't know how much they are going to escalate unless and until they are not diversifying. अब उनके पास बाकी सिर्फ दो ही कोर बिजनेस है. दिस रिलायंस रिटेल, मतलब जो आप रिलायंस के सुपरमार्केट या जो भी आप देखते हो वो, एंड जियो. तो जियो प्लेटफॉर्म्स पे आई डोंट नो लाइक ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज भारती एयरटेल इज नाउ गोइंग स्ट्रॉन्ग कंपटीशन विद देम. वोडाफोन आइडिया दे या ना दे, भारती इज गिविंग देम. तो आई डोंट नो लाइक हाउ दे आर गोइंग टू नाउ डाइवर्सिफाई. क्योंकि क्या होता है कि इतने काफी टाइम से आप नंबर वन रहे हो, तो फिर वो एक ईगो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं पे तो समहाउ. ये तो 1000 बोल दिया मैं. मे ऑप्शन, मे का ऑप्शन देखो 17 रुपीज पे चल रहा है. टाइम वैल्यू 17 है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है. लॉट साइज इज 1200 समथिंग, 1250. So just imagine approx 20,000 your time value is 2. I don't know like who is buying over there. Okay, examples of rights issue. Investor A is holding 100 shares in company X, which he had purchased from the secondary market through investor Z. So company X is now offering him rights issue in the ratio of 3:5 at rupees 90 per share, which is at a 25% discount now. 25 discount मतलब 120 चल रहा है करंट मार्केट प्राइस, लेकिन 3:5 मतलब हर 5 पे 3 राइट्स इशू के शेयर्स दे रहे हैं at the price of rupees 90 per share, right? Thus, A has the right to buy up to 60 shares. Matlab that is 3 by 5 multiplied by 100. Here already is having for rupees 5,400, which would otherwise have cost him 7,200 in the market. मतलब डायरेक्टली अगर बाय करने के लिए गया होता तो मार्केट प्राइस के हिसाब से उनको बाय करना पड़ता है इतना. प्लीज नोट दैट द इन्वेस्टर कैन चूज टू रिजेक्ट द राइट्स इशू. हाँ, राइट्स इशू भी मैंडेटरी नहीं है. आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो यू कैन रिजेक्ट इट. बट ऑफ कोर्स आई विल से कि राइट्स इशू भी ले लेना चाहिए. व्हाई? बिकॉज इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू हैव मोर नंबर ऑफ शेयर्स, और अगर वो कंपनी ग्रो कर गई तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी. A few features of the rights issues by the Indian companies are noteworthy. Rights issues sometimes work in favor of promoters or stakeholders, and minority shareholders often feel the pressure, and therefore SEBI came up with a takeover code to safeguard the interest of the minority shareholders of a firm who are controlling between 15 and 55% cannot increase their holdings by more than 5% in any financial year. Promoters who own more than 55% can increase their ownership only via an open offer. Open offer मतलब डायरेक्टली अगर मार्केट से बाय बैक कर रहे हो तो ठीक है. अदरवाइज क्या होगा, उसको राइट्स इशू में प्रमोटर के तो शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट? तो इन दैट केस मतलब बाकी जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगा कि उनका स्टेक इंक्रीज होता जा रहा है. तो डेफिनेटली दिस इज मोर फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव और टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग मैनेजमेंट थिंग, ओके, नॉट फ्रॉम द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव. So in that case, SEBI had come over with the takeover code. So just write one, what is takeover code? Just write one question. It can be asked sometimes depending. अगर कहीं वो होने वाला क्वेश्चन है.
Even keep in radar this Buro Renewables, portfolio stock है. Buro Renewables is like ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर उनका फोकस है. बोरो पता है ना कौन सी कंपनी है? बोरोसेल ग्लास, एनीवन घर पे है ना? हाँ, तो वही जो मतलब कंपनी जो बनाती है बोरोसेल, उनकी एक दूसरी कंपनी है बोरो रिन्यूएबल्स करके. दे आर मोर इनटू दिस ग्रीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जीज. ठीक है, 200-300 पे था 1.5 साल पहले. अभी आई थिंक 700-800. और उनका कुछ तो न्यूज है, समवन इज बाइंग आइदर रिलायंस और समवन एल्स, या तो स्टेक बढ़ा रहे हैं उनमें, जस्ट बिकॉज इट इज इनटू ग्रीन एनर्जी. बहुत सारे स्टॉक्स का नाम लाइक यू हैव टू रिमेम्बर, ऐसे मतलब अदरवाइज आप ट्रैक ही नहीं कर पाओगे. मतलब भाव पता होना चाहिए, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है. डोंट जस्ट डिपेंड योरसेल्फ ऑन द मनी मार्केट. तो इससे भी बड़ा है कितने रेट्स कहाँ पे कौन से चल रहे हैं. ठीक है, अदरवाइज वो क्लाइंट डील होगा, बोले डायरेक्टली आपको कॉल पे बोलेगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट आई एम गोइंग टू गेन ऑन टी बिल्स. वहाँ पे डेफिनेशन तो आएगी नहीं व्हाट आर टी बिल्स. ठीक है, so in the client meeting you need to make sure that you are aware about all these things. Okay, now what are the different stages in the rights issue? Distribution of the rights entitlement by the issuer to the existing shareholders. Shareholders will then elect or decline to subscribe to the given offer of common shares, and non-subscribed rights will expire at the subscription deadline. Company will then sell off the lapsed rights subsequent to the issue process. So पहले company का announcement आएगा similar to our buyback or something like that. Company बोलेगी we are going to give you rights issue, if you want it you can take it. आपका फिर डिसीजन होगा. इफ आई एम गोइंग फॉर द राइट्स इश्यू देन ऑफ कोर्स वो डायरेक्टली एक एप्लीकेशन, आजकल तो ऑनलाइन हो गया, अदरवाइज वो फिजिकल फॉर्म सिस्टम हुआ करता था, फॉर्म फिलअप करके भेजो कंपनी में वगैरह वो होता था. बट नाउअडेज एवरीथिंग इज ऑनलाइन. इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर द राइट्स इश्यू डेफिनेटली दैट शेयर्स आर गोइंग टू लैप्स, बट सब्सक्रिप्शन डेडलाइन तक वो टाइम लगेगा. ठीक है, so these are the important steps. Issue price should be decided before determining the record date, which must be determining consultation with the not only just designated stock exchange, लेकिन यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट बैंकर का रोल आएगा. कौन से प्राइस पे मैं राइट्स इश्यू करना चाहता हूँ वो एनालिसिस के बाद ही पता चलता है, राइट? L&T हाउसिंग फाइनेंस का राइट्स इश्यू तब आया था जब वो 93 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था, 65 पे राइट्स इश्यू दिया था. ओके, 1:4 रेशियो समथिंग लाइक दैट. A rights issue should be open for subscription for a minimum period of 15 days and for maximum of 30 days. 30 days मतलब ऐसा होगा कि एक महीने के लिए वो पूरा आपका ब्लॉक हो जाएगा. ठीक है, द इश्यूअर मतलब आप अगर आपने बीच में बेच दिया ना नंबर ऑफ शेयर्स, तो ऑफ कोर्स दैट रेशियो इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू. पहले 100 थे तो 25 आने वाले थे, बीच में आपने 50 निकाल दिए, तो 1:4 50 में सिर्फ 12 शेयर्स बचेंगे. फिर एक तरीके से ब्लॉक हो जाएगा फॉर दैट राइट्स इश्यू. गेटिंग आइडिया या ब्लैंक? समझ में आया कि नहीं आ रहा है? क्या है राइट्स इश्यू? क्यों देते हैं कंपनी? स्टेक बढ़ाने. कौन सा स्टेक? अगर मैं दे रहा हूं तो स्टेक बढ़ेगा कैसे? राइट्स मतलब आई एम हैविंग दैट राइट्स. ठीक है, क्यों राइट्स है मेरे? बिकॉज आई एम होल्डिंग द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो कंपनी ने बोला आप लॉयल शेयर होल्डर हो, काफी टाइम से मेरे साथ एसोसिएटेड हो, तो मैं आपको राइट्स इश्यू करता हूँ. राइट्स इन द सेंस कि आपके पास 100 शेयर्स हैं, 25 शेयर और देता हूँ. वो प्रॉफिट ही होता है, उसका प्राइस नहीं हमको पे करना है. ठीक है, 25 शेयर एक्स्ट्रा दिए इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड या जो भी उनको बोल दो. ठीक है, बट एक तरीके से आपका तो कैपिटल एप्रिसिएट हो गया उतना. 25 शेयर्स इंटू करंट मार्केट प्राइस पे जो भी चलेगा, तो दैट विल बी योर प्राइस. करेक्ट? अभी पता क्लियर इन डाउट्स? ओके, तो राइट्स को नाम से ही मतलब याद रखो, यू आर गेटिंग द राइट्स बिकॉज यू आर अ लॉयल शेयर होल्डर फॉर दैट कंपनी. ओके, देती है, डिपेंड करता है. सी, should I go for dividend or should I go for rights issue, that will be a decision taken by the board. ओके, वो डिपेंड करता है, नेसेसरी नहीं है या मैंडेटरी भी नहीं है, लेकिन दोनों भी कर सकते हैं. अगर राइट्स इशू किया है तो डिविडेंड भी देता है, ऐसा नहीं है कि राइट इशू कर दिया तो डिविडेंड नहीं देंगे. ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स बढ़ेगा ना. मेरे पास पहले 100 शेयर्स थे, अब 125 हो गए, तो आई कैन एटलीस्ट सेल दोस 25 शेयर्स इन द मार्केट. करेक्ट? 25 शेयर्स अगर मैंने सेल कर दिए हैं तो डेफिनेटली दैट लिक्विडिटी इज गोइंग टू इंक्रीज इन द मार्केट. तो मतलब 25-25 गिन के सबका गिन लो, अगर 100 लोगों के पास भी होता तो 2500 शेयर्स का लिक्विडिटी बढ़ गया मार्केट में ऑटोमेटिकली. ओके,
if the issuer can utilize these funds collected in rights issue after the finalization of the basis of allotment. If the issuer withdraws the rights issue after announcing the record date, it cannot make an application for listing any of its specified securities on the stock exchange for a period of 12 months from the record date. मतलब अगर issuer withdraw कर देता है rights issue after announcing the record date, then it cannot make an application for listing of any of its specific securities. मतलब आप record date चला गया, आप एलिजिबल हो गए, ठीक है, आपने अप्लाई भी कर दिया, लेकिन बीच में फिर विड्रॉ किया, इन द केस देन यू विल नॉट बी अलाउड टू सेल दोस राइट्स इशू वाले शेयर्स 25 जो आने वाले थे, ओके, अनलेस एंड अंटिल दे नीड टू गेट डिपॉजिटेड इनटू माय डीमैट अकाउंट फर्स्ट, ओके. No issuer shall make a rights issue of the equity share if it has an outstanding fully or partly convertible debt instruments at the time. Debt instruments है तो ये कोई debt to equity वाला तो है नहीं chapter, ठीक है. Basically it is more of equity plus equity, not debt into equity. So if you are having any debt instrument in the company, you are not liable for the rights issue. Please make it clear, ठीक है. कौन कौन से debt instruments थे? Okay, yeah, so if any of the bonds or something like has been issued by the company and you have been given a loan to the company, then you are not entitled. So just write one line: all the debt holders of the company are not entitled to get the rights issue. Okay. अच्छा 12 बजे होगा, लेट होगा. हाँ, उनको बोल दो मैं आता हूँ, उनको बोल दो मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ. Okay, now say for example Fame Ad Labs करके कोई कंपनी था, they issued a rights issue of around 2 crore 2,90,000 equity shares against 90 crores. तो प्रॉफिट तो इतना हो मतलब होना चाहिए पहले, तभी जाके उतना राइट्स इश्यू करेंगे ना, राइट. Now the rights issue ratio was 58 equity shares for every 100 equity shares that you were holding. Okay, by the shares on the record date कौन सा था? 25th Jan 2012. These additional shares were given at a price of 44 per equity share और फेस वैल्यू कितना था? 10 rupees. Open market price or the current market price was 48 and thereby giving a discount of 8.3. तो आपका एक्चुअली गेन कितना होना चाहिए? 58 into 44. आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? 100 into 48. तो 4,800 के बदले में, हाँ यस, 48 into 100 that is 4,800 का आपका इन्वेस्टमेंट था. और जस्ट कैलकुलेट 44 into 58 is how much? 2,500. 44 into 58. Okay, so approx 50% we can say. 50% का straight gain you are having now. Or I can even say that now I am holding 150 share, 158 shares, 100 initially, 58 बाद के. Okay, so आपको जब भी calculations करना हो ना तो make do this one thing. Okay, initially number of shares is equal to 100, current market price 48. So say for example
I invested at that price only. Okay, entitled to receive rights issue. ठीक है, at price how much? 44. ठीक है, how many? 58. So is equal to 58 into how much? 44. ठीक है, now you have to simply this is the amount of percentage that you will be getting. Just a minute, I am coming. हाँ, किसका है? हर रोज बर्थडे है क्या आपका? हाँ, अच्छा, और इन तो उस दिन कौन सा था? मतलब बर्थडे वीक में एक ही का आता है फिर बाकी? ओके, तो बारबेक्यू में लेके जा रहे हो क्या सबको? प्लेसमेंट अगर हो गया ना पूरी बैच का, देन प्लीज टेक मी डेफिनेटली. हाँ, वेज आई एम वेज. गुजरातीज आर वेज. ओके, ज्यादातर, इसलिए अंबानी अदानी चलते रहते हैं एक दूसरे के. हाँ, बिजनेस माइंडेड पीपल आर. हाँ, ओनली ग्रीन्स, यस. ठीक है, so basically whenever you are going for the rights issue, don't only just take into account this much percentage. Why? Because say for example in the future if this 48 is even going to touch 100, this 5800 will be your extra gains. Okay, और उसका कितना होगा? 100 minus 48 था आपका प्राइस into 100 again number of shares. So how much is my gain now? 11,000. इन्वेस्टमेंट कितना था मेरा? 4800. ऑलमोस्ट 3 times, sorry, 2.5 times we can say, right? तो राइट्स इशू का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है. So whenever you are getting any particular stock that is providing rights issue, please go for it, but fundamental analysis के बाद, ठीक है, not before that. ये वाला 58 शेयर्स हमको राइट्स इशू में मिले at the price of 44. So 58 into 44 is how much? 2,500. Okay, now 2,500 is my net profit without any actual investment. But if I count on my original investment, which was 4,800, it comes to 53%. Okay, ये वाला, ये हमने 48 पे बाय किया था 100 शेयर्स हमारे, तो 48 पे बाय किया है. अभी वो उसका प्राइस हो रहा है 100. तो 100 minus 48 is 52. Number of shares are 100. तो 52 into 100, वहां पे भी 5,200 का गेन्स होगा, प्लस 5,200 कैसे 5,800 कैसे आया? 58 शेयर्स है ना यहाँ पे, into now current market price is 100. So 5,800, that is my extra profit plus my original profit on the already holding shares, which is 5,200. So total profit will be now 11,000. लिखना है तो लिख लो, फिर वो
भूल जाओगे वापस। ठीक है, रिन्यूएबल्स इतना बढ़ा दिया। अभी तो हम 7 कितना चल रहा था, दैट इज ऑल्सो गोइंग फॉर 1000 लॉन्ग टर्म। म्यूचुअल फंड का जॉब ले लो, सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो बनाते रहो लोगों का। सीरियसली यू डोंट फाइंड हाउ पीपल आर गिविंग मनी नाउअडेज। रिसेंटली एक मतलब जस्ट आई गॉट कनेक्टेड विथ वन डॉक्टर एंड उसने बोला आई एम गिविंग यू 50 lakhs, जस्ट मेक श्योर आई गेट 20% रिटर्न ऑन एनुअल बेसिस। आपको जैसे भी ट्रेड करना है, जैसे भी ये करना है, जस्ट वो चेक करके रख लो। मैंने बोला सी दिस इज नॉट द वे, स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि पैसा डाल दिया और बस बाहर प्रिंटिंग मशीन रखा हुआ है हम लोगों ने। पॉसिबल, पॉसिबल यस, इफ यू सेलेक्ट स्टॉक्स वाइजली। म्यूचुअल फंड्स का भी म्यूचुअल फंड्स होना चाहिए। व्हाई नॉट ऑल द 50 lakhs हैज टू बी पुट इन वन म्यूचुअल फंड स्कीम। ओके, ग्रोथ वाले में ज्यादा डालो, डेट वाले में थोड़ा बैलेंस कर दो। यस, और लार्ज कैप में बाकी का रेस्ट ऑफ दैट वहां पे टू जस्ट हैव अ स्टेबिलिटी इन द पोर्टफोलियो। तो यू नीड टू हैव एटलीस्ट अराउंड 10 डिफरेंट स्कीम्स एंड इन्वेस्टिंग 5 lakhs each। ओके, तो उसको भी आप डाइवर्सिफाई और कर दो। म्यूचुअल फंड इज ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड अदरवाइज। हाँ यस, लेकिन वो लॉक इन होता है। जो भी उसका रिटर्न होगा यू विल बी एबल टू हैव अ टैक्स, मतलब जितने भी आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो यू कैन डेबिट इट एटीसी सेक्शन में। लेकिन वो 1,50,000 की लिमिट है, अगर उससे ज्यादा गया तो फिर वापस वही टैक्स का तो इशू होगा स्टार्टिंग में, दैट इज फाइन। फिर मल्टीपल टैक्स सेविंग स्कीम्स या ELSS schemes, equity linked saving schemes, you can go for it. See, basically you need to have 5 different types of instruments in your life. One basic has to be a pension fund. Despite the fact आप कंपनी में जाके आपका वो NPS स्कीम में काटेंगे वगैरह वो रहेगा, वो ठीक है, बट अपने लिए अलग से होना चाहिए। One thing. Second has to be a fixed deposit that will mature at 4 different stages of your life. After every 5 years, 10 years, 15 and 20 years. Because अब यहाँ से 5 साल के बाद अगर आप देखते हो तो जस्ट इमेजिन आपका मैरिड स्टेज वाला लाइफ वाला स्टार्ट हुआ होगा कम से कम। आफ्टर 10 years योर फ्यूचर जनरेशंस, आफ्टर 15 years उनके एजुकेशन, आफ्टर 20 years उनका मैरिज। So that has to be your trajectory way of investing. Third has to be of course gold, because if you ask your parents, एक बार अपने पेरेंट्स को बोलना जब आपकी शादी हुई थी तब उस टाइम गोल्ड का रेट क्या था। आई थिंक इट कुड बी अराउंड 3 to 4,000, उससे ज्यादा नहीं होगा। और आज क्या चल रहा है 50+ अप्रोक्स। ठीक है, तो अगर अपने ही मतलब 25 साल के वो कम से कम वो एस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट इट हैज गॉन टू 17 times। और आपको गोल्ड की जरूरत तो कहीं ना कहीं पे वापस पड़ने ही वाली है आफ्टर 25 years ऑल्सो, बिकॉज डोंट एक्सपेक्ट कि आफ्टर 25 ईयर वो 50,000 पे आपको गोल्ड मिलने वाला है। आई डोंट नो, 1,50,000 रेट हो गया देन ऑल्सो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। तो फोर्थ वो इंस्ट्रूमेंट होगा और फिफ्थ कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट। ओके, so this is your 5 different types of instruments that anyone should invest. Written everyone this? Okay. Online students, written everyone this example? Yes, sir. Okay. ये कैलकुलेशन किया हुआ है लेकिन दिस इज अगेन रॉन्ग। Okay, mandatory events with the options. Cash stock option. Shareholders are offered the choice to receive the dividend in cash or in addition new shares of the company. Reinvesting often carries a tax shield. So for example, if you are reinvesting, उसके साथ tax associated है, ठीक है? Merger with election. Merger of 2 or more companies into one new company. The shares of the old companies are consecutively exchanged into new shares and the new company according to a set ratio. Shareholders of both the companies are offered choices regarding the securities they receive. ओके, तो जस्ट अभी HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हुआ था, तो दोनों के जो जितने भी आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स है दे विल बी नाउ गेटिंग एक्सचेंज इन अ पर्टिकुलर रेशियो। एक दूसरे की कंपनी के कुछ ना कुछ मिलेंगे। तो डू वन थिंग, राइट वन असाइनमेंट ओवर हियर, आइडेंटिफाई द मर्जर रेशियो ऑफ HDFC एंड HDFC बैंक
किसको कितने शेयर्स मिलेंगे उसमें, ठीक है। आइडेंटिफाई मर्जर रेशियो ऑफ HDFC and HDFC Bank and determine how many shares will get to the investor or shareholder. And second assignment, identify demerger ratio for Adani Enterprises into, identify demerger ratio of Adani Enterprises into Adani Ports, Adani Transmission, Adani Gas, and Adani Green Energy. Transmission, Adani Energy, Adani Green Energy, and Adani Gas. I'm not sure whether it was Adani Power also at that time. रिपीट करिएगा क्वेश्चन. Identify the demerger ratio of Adani Enterprises ये अभी टोटल गैस है. I have sent message to everyone in the chat box. Online students, please write that question from that. Okay? Yes. Okay. What was spin-off? Spin-off we had seen in the last lecture. We had written, right? Spin-off बोला था होने का क्वेश्चन है करके. Correct. So now it is like getting the divided into from parent into child. Okay. So distribution of the subsidiary stock to the shareholders of the parent corporation without having cost to the shareholder of the parent issue, whereby the shareholders are offered choices regarding the resultant stock. Okay. Corporate action. No demerger. Demerger. See, merging will be two different entities altogether, and this is like one company getting split into something else. Okay. डीमर्जर नहीं होगा. तो अदानी एंटरप्राइज का जो हमने वो देखा है ना सेकंड क्वेश्चन, दैट इज मोर ऑफ लाइक अ स्पिन ऑफ, इट इज नॉट डीमर्जर. हाँ, यस यस यस. तो एक्चुअली आई थिंक उसमें ऐसा था कि अदानी एंटरप्राइज के स्टॉक्स अगर हैं तो अगेंस्ट दैट दे प्रोवाइडेड सम स्टॉक्स ऑफ दिस अदानी ग्रीन, सम स्टॉक्स ऑफ द अदानी ट्रांसमिशन एंड समथिंग, मतलब हर एक के कुछ ना कुछ दिए थे. तो जस्ट फाइंड आउट कितना था, कैसे था. ठीक है. कॉर्पोरेट एक्शन प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल. Announcement collection, collecting corporate action, consolidating data, preparing for comparison. So this is more of like preparing your balance sheets and sharing your P&L statements, normalizing, reconciling and enriching the data, validating it for the accuracy and completeness. Why? Because that data is going to get published worldwide type. हर एक फाइनेंशियल एनालिसिस के पास वो डेटा जाएगा. And identification and nomination, determining the investors impacted by event and calculating entitlements, notifying the investors for announcement information. Then election processing, so that is more of like reconciliation elections, communicating elections. Election is more of like an announcement from the investors through various financial intermediaries. And event settlement, so delivering securities and receiving in the case if it is rights issue or if it is bonus issue or if it is buyback. Reconciliation of the accounts, of course we have seen. Okay, so this is more of like
not important from theoretical as well as perspective, but just what you can do is write this thing. Processing of corporate actions will be taking place through processing of corporate actions will be taking place through announcement collection, validation, identification and notification, election processing and event settlement. Announcement of process. Announcement of corporate action processing. Done, everyone? Okay. So corporate actions and events, more or less we are completed with that chapter. Okay. Now we will be first taking this shorter one. Yeah, all it. Securities borrow lending or stock borrow lending. This chapter and after that reference data management. Okay. And after that we will be left with one more reference data management subtopic, account reconciliation, and this collaborative lending. Yeah. Okay. So next week may okay. Tell me one thing. Okay. आपका Monday छुट्टी है. 26, 7, 8, 9. सॉफ्ट स्किल्स के कितने सेशंस आप बोल रहे हो? सीवी रेज्यूम बिल्डिंग हो गया, सीवी वो पेंडिंग है. Okay. मॉक्स कब रखना है फिर लेवल 2? 28 अप्रैल. मई. हाँ, कौन मई कौन बोल रहा है 28 में? फर्स्ट वीक ऑफ मई. ओके. कहाँ पे जरूरत है पहले ये बताओ तो उस हिसाब से आई कैन प्लान फॉर द सॉफ्ट स्किल्स. मतलब कौन कौन से टॉपिक्स या समथिंग लाइक दैट. कल के एक्सपीरियंस, कल को आपको लग रहा था भी और यहाँ पे मुझे जरूरत है, ऑनेस्टली बताओगे तो उस हिसाब से वी कैन टेक इट. पब्लिक स्पीकिंग. हाँ, योर्स. ठीक है. हाँ, वो सीवी हो गया. हाँ, देन अटेंड नहीं किया था क्यों? अच्छा, टर्न नहीं आया था. ओके. हाँ बट नहीं वो ठीक है.
नहीं नहीं वो ठीक है, बट कहाँ पे जरूरत है वो मैं पूछ रहा हूँ। हम नहीं, तो अच्छा वो वही होगा कम्युनिकेशन स्किल्स। देन लास्ट वन सीवी कम्युनिकेशन आपका दोनों आपका। नहीं नहीं, हाँ वो ठीक। विच टाइप ऑफ हेल्प यू नीड इन दिस सॉफ्ट स्किल लेक्चर? रिज्यूमे बिल्डिंग, ओके, कम्युनिकेशन, सीवी हो गया। अच्छा वो बाय डिफॉल्ट है। हाँ सीवी कम्युनिकेशन। आपका टर्न आया था, जिनकिन का कम्युनिकेशन वीक है क्लास में, आपका टर्न आया था क्लास में, कैसा रहा? हम्म, ओके, बट अभी और बढ़ सकता है। ओके, आपका टर्न आया था, हाउ वाज इट? ओके, आई थिंक द फर्स्ट दैट प्रेजेंटेशन जब हमने किया था, आफ्टर दैट दिस थोड़ा वो गैप हो गया था। ओके, आपका हाँ कम्युनिकेशन, ओके ओके, इन दैट केस लेट मी सी व्हाट वी कैन। तो मतलब आपको 2 लेक्चर्स नेक्स्ट वीक ही चाहिए क्या? ऐसे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बैक टू बैक लेक्चर्स नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन एक मुझे लग रहा है कि एक कर देते हैं लेवल 2 का, सो दैट थोड़ा कंसेप्ट वाइज प्लस आपका वो प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह वो भी हो जाए। तो वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मई में रखते हैं। ठीक है, तब तक आपका शायद वो सिलेबस भी खत्म हो गया होगा एंड यू विल बी फ्री ऑल्सो। आपके असाइनमेंट्स तो है नहीं इसमें, सिर्फ क्विज वगैरह ही है ना लेवल 2 में एलएमएस में। तो वी कैन प्लान फॉर दिस प्रेजेंटेशन प्लस रिवीजन। अगर कंप्लीट हो जाता है सिलेबस तो प्रेजेंटेशन प्लस रिवीजन विल बी डन इन दिस। ओके, 10th को वी विल टेंटेटिवली देन प्लान फॉर मॉक्स। व्हाई? बिकॉज देन यू विल गेट 3 days ऑफ प्रिपरेशन ओवर हियर, 7, 8 एंड 9। ओके, हाँ वही तो रिवीजन, रिवीजन इज रिफ्रेशर। रिफ्रेशर मतलब क्या? मोर ऑफ लाइक डाउट क्लियरिंग प्लस वॉट एवर यू थिंक्स वांट टू डिस्कस। तो 10th of May वी विल बी हैविंग मॉक्स। फिर अगर ये खत्म हो जाता है तो 24th को फाइनल मार्क्स हो जाएंगे फिर आपके। अगर बिकॉज 11, 12, 13 3 days over here, 5 days over here, so what we can do is we will be having आपका कब है एग्जाम्स? अच्छा 26 to 4, 20th के पहले आपको खत्म करना है। आपका सेकंड मॉक अगर शेड्यूल जल्दी हो जाता है देन ओनली वी कैन डू, बिकॉज यहाँ पे क्योंकि सी मतलब लेवल 3 का फाइनल मॉक इज लाइक कंबाइंड ऑफ लेवल 1, 2 + 3। ठीक है, तीनों का कंबाइंड है फिर आपका। फिर वहां पे कोई सेग्रीगेशन अलग से लेवल 3 नहीं है, मतलब वो फाइनल मॉक है आपका। एंड फाइनल मॉक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर स्कोर परस्पेक्टिव या वॉट एवर, राइट? तो वो फिर इतना शॉर्ट टाइम में विल यू बी एबल टू रिकवर देन? हो जाएगा आपसे? तो देन आई कैन प्लान इन थर्ड वीक एवरीवन। फाइनल मॉक लेवल 1, 2 एंड 3, ऑल 3 मॉक्स इन थर्ड वीक, कैन वी डू? नहीं सी थोड़ा तो मतलब आएगा, इतना शायद डिले भी नहीं होगा, बिकॉज लेवल 3 इतना लंबा है भी नहीं इन दैट केस। या नेक्स्ट वीक में तो मैं पूरा खत्म कर ही दूंगा, बट वही है कि फिर आपका सॉफ्ट स्किल्स पेंडिंग रह गया, तो आई डोंट वांट दैट आल्सो। क्योंकि इस वीक का हो गया आपका सॉफ्ट स्किल्स। अब नेक्स्ट वीक में अगर मैं 2 सेशंस भी अगर मैं करता हूँ, दिस even if I'm taking 2 sessions for, then I will be only left with 2 sessions only. तो 2 सेशन में तो शायद आपका वो खत्म नहीं होगा लेवल 2। आई नीड टू हैव ऑल द सेशंस। आई थिंक व्हाट वी कैन डू इज, अगर लेवल 2 का 10th को रखते हैं
तो लेवल 2 का तो नॉलेज आपको फ्रेश ही रहेगा थोड़ा इन दैट केस। लेवल 1 यू कैन प्रैक्टिस इन दिस ड्यूरेशन और 17 को रख सकते हैं फाइनल मॉक्स, 17 या 18 विच एवर डेट, बट नॉट मोर देन थर्ड वीक के ऊपर नहीं जाऊंगा। मैक्स बाय 20 आई विल बी टेकिंग, दैट वी कैन डू बिकॉज अपना सिलेबस खत्म हो गया है। लेवल 2 के मॉक्स हो गए हैं, लेवल 3 तो वैसे भी 2 या 3 टॉपिक्स है, उससे और तो आगे जाएगा नहीं। लेवल 1 तो आपका थोड़ा बहुत रिफ्रेश करते रहो, दैट्स इट। तो मैक्स बाय 20 वी कैन कंप्लीट, राइट? ओके, ठीक है, पीछे आगे एवरीवन। So 20th May को final mock. या टेंटेटिवली, इट्स नॉट प्री प्लान्ड अभी, बट दैट इज व्हाट, अगर मैं शेड्यूल के हिसाब से, बिकॉज सी अगर यहाँ पे मैंने 3 लेक्चर्स लिए तो एक तो आपका सॉफ्ट स्किल्स का यहाँ पे आ रहा है। अगेन इन द नेक्स्ट वीक 10th को आपका अगर मॉक है तो 11th 12th या 13 में अगर मैं मतलब लेवल 3 कंप्लीट कर रहा हूँ जितना भी, उसमें से एक सेशन वापस विल बी हैविंग ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। देन इन द नेक्स्ट वीक अगर हमारा लेवल 3 बाकी भी रह जाता है तो 17th को आई विल कंप्लीट, 18th को आपका सॉफ्ट स्किल्स, 19th योर विल बी हॉलीडे और 20th को मॉक। दिस इज व्हाट आई कैन डू, बट यहाँ पे आपको फिर वो 13 सॉरी 14 15 एंड 16 का छुट्टी मिल सकता है प्रिपरेशन के लिए। और जस्ट बिकॉज योर लेवल 2 का मॉक हुआ है 10th को, तो यू जस्ट नीड टू रिवाइज लेवल 1 एंड लेवल 3, राइट? लेवल 2 का मतलब थोड़ा बाद में भी रिवाइज कर दोगे तो चल जाएगा, करेक्ट? क्योंकि 20th का बाद देन यू विल बी डायरेक्टली एलिजिबल फॉर योर कंपनीज वगैरह जो भी होगा। सो 10th एंड 20th टेंटेटिव, एंड एक सेशन आपका होगा नेक्स्ट वीक, मतलब बिटवीन 26 टू 29, एक आपका सॉफ्ट स्किल्स का उस टाइम पे, फिर होगा आपका दिस फर्स्ट वीक ऑफ मे, सेकेंड वीक ऑफ मे एंड थर्ड, मतलब 4 सेशंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स आर आल्सो प्लान्ड। आई थिंक दैट विल बी इनफ देन, 4 सेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। तो 16 आवर्स तो बहुत हो गए ना सॉफ्ट स्किल में, कितना चाहिए आपको? एंड ऑल्सो वे विल बी, यहाँ पे जो भी एक सेशन रहेगा वो मेरा मतलब हमारा वो एक प्रेजेंटेशन का डाल देंगे, तो दैट ऑल्सो एक सॉफ्ट स्किल। तो 5 सॉफ्ट स्किल्स एंड रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड। एनी डाउट इन दिस? प्रोबेबली ऐसे प्लान करके आज से ही चलना, ठीक है? फिर लास्ट मोमेंट पे फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम होता है। ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ स्टॉक बोरो लैंडिंग। So stock lending is basically temporary transfer of the securities by a lender to the borrower with agreement by the borrower to return equivalent securities to the lender at pre-agreed time. The securities are not actually lent, the securities are sold to the borrower under an agreement for subsequent reacquisition. And most of these activities will be taking place over the counter market against the collateral, which can be in the form of cash, securities, or other assets. The eligible collateral will be agreed between the parties outside and it is governed by General Master Security Lending Agreement. Okay. So stock borrow lending से नाम से ही पता चलता है कि someone is the holder of the securities is now selling his securities to the borrower in the case if he is requiring any particular finance or something like that. In this case, there will be a pre-date determined during which this securities will be again bought back by the borrower. कहाँ पे देखा था ऐसा transaction? Repurchase agreement, right? And one more thing is this activity always takes place on the over the counter market. Why? Because exchange पे ऐसा कोई transactions possible ही नहीं है और eligible भी नहीं है, and it is monitored by General Master Security Lending Agreement. So you can just write the definition of stock lending and borrowing. This one, stock borrowing and lending.
Written, everyone? Okay. Securities lending is a misleading term because in legal terms the securities are not actually lent but it is actually sold over here. तो ऐसा मत मानना कि lend किया हुआ है. Finance होता तो lend होता, but securities are always bought and sold. Okay. With an agreement to reacquire equivalent securities in the future, the original securities may be sold onwards by the borrower to the third parties, and the absolute title passes over both the securities lent and collateral received. Okay. Now, why securities lending? Investment banks, brokers, and market makers borrow the securities for a variety of reasons, such as to ensure settlement of trades can take place, but most important is to facilitate the market making and other trading activities such as hedging and short selling. Okay, most important, short selling and hedging. Okay, कल भी देखा था short selling, sorry, short covering, call options में होगा कल, right? Why securities lending? That we have seen, securities lending plays an important role in providing liquidity for the market by facilitating price formation and high settlement success. So basically you are lending securities for different purposes. One can be, of course, to have different types of transactions settled. One. Second, you might be requiring personal finance for some other transactions, and it can be the financial entity out there. And third, even it can be for different corporate actions, certain corporate actions related to either this debt type of markets. Okay. So who will be the participants of this? Bank, market makers, hedge funds. Market makers are basically those who are aware about the situations at both the sides. किसको पैसा चाहिए और किसके पास पैसा है. So they are more of like a commission agents or brokers or dealers. Okay. Price makers, yeah. Hedge funds, traders, mutual funds, and broker dealers. They will be executing orders on behalf of their clients, and whereas a trader will be trading for their own account. Okay. So you can just write who are the participants of stock borrowing lending. These are the participants. Stock borrowing lending. No, in India it's not there. Anyone that checked the history of KSCL? KSCL, हमने वो स्टॉक देखा था, right? Did we check the chart of KSCL? No, नहीं देखा होगा. KSCL no. Online students, please write this. Written, everyone online. Yes, sir. Yes, sir. Okay. No, sir. No, sir. तो लिख लो. No one has checked fundamental analysis. Assignment दिया था कि नहीं दिया था? I think in another batch I have given. Huh? And that is fine, but that something very precious is there. I don't know. देख लो extra assignment, perform fundamental analysis of KSCL. ठीक है, स्क्रीनर पे जाके एक बार देख लेना. फाइनेंस मोर ऑफ गिवर, मतलब जो बाय करता है.
So he is selling na his security. Of course, for the purpose of debt raising, he will be either giving interest or he will be recollecting it. Same, more of like a repurchase agreement only, nothing else. लेकिन वो ओवर द काउंटर मार्केट में ये सब ज्यादा चलता है. इट्स नॉट डायरेक्टली पॉसिबल अदरवाइज. स्टॉक लेंडिंग वो विल एक्चुअली डू सच एक्शंस. एक्चुअली बहुत जिनको ज्यादा डेट चाहिए और कहीं से भी नहीं मिल रहा है. व्हाई? बिकॉज दैट बैलेंस शीट विल बी पुअर. ओके, नो वन विल बी हैविंग अ प्रॉपर क्रेडिट रेटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. तभी जाके ये सब होगा ना. अदरवाइज वो विल बी इंटरेस्टेड ऑल्सो इन टेकिंग ऑल दिस थिंग्स. डेट रेज कब करना होता है? आइदर रिस्ट्रक्चर कर रहे हो या तो फिर एक्सपांशन के लिए. दो ही पर्पस है अपने पास जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है. एडवर्टाइजमेंट बहुत आ रही है क्या? KCL, can you see the price over here? यहाँ approx 0.8 0.9 जितना है, somewhere here. Let's assume by October point कितना था? 7. Let's take it 0.8. October November के आसपास 0.8 था. Now do one thing, calculate 1 lakh rupees of investments divided by the share price of 0.8. 1 lakh divided by 0.8 कितना होता है? 1 lakh divided by 0.8. 1,25,000. Okay, वो था कब? November 2021, right? Now just check the price. Okay, 102. Just multiply into 102. कितना टाइम हुआ? 2 और 4 6 महीने मैक्स. How much it is coming? 1,25,000 into 102. 1 crore 27 lakhs. So if you had invested in this last November, मतलब Diwali time, 1 lakh of rupees could have earned you 1 CR. तो एक सिवा प्रोग्राम हो गया 6 महीने का. हाँ, क्या आ रहा है? अच्छा, पुणे में फ्लैट हो जाएगी. अच्छा, तो फिर जॉब भी नहीं चाहिए. नहीं, फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हम खुद ही खोल लेंगे अपना. Okay, so what sort of securities will be traded in security lending and borrowing? So of course, interest or the fees will be exchanged over here. So sending lending covers securities such as equities. It can be there, or it can be fixed income instruments, or it can be corporate debt obligations or other collaterals. The lending flow will be like this. The lender will be passing his securities to the borrower. In return, he will be either charging fees, and also lender will be paying interest to him for whatever the securities are being provided. So this is more of like an example of our repo agreement, right? So when a security is loaned, the title of the security gets transferred
प्लीज रिमेंबर कि जो टाइटल होता है, टाइटल मतलब ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी विल गेट ट्रांसफर्ड. The borrower has the advantages of holding the security as they become owner of it. The borrower will receive all the coupon and dividend payments, other rights such as voting rights. This dividends and coupon must be passed back to the lender in the form of what is referred to as manufactured dividend. Okay, in the case if the securities are being written back, okay, a payment made to pass through the dividend and interest paid from the borrower to the lender of those securities is known as manufacturing dividend. Why? Because initially the securities were of the seller, बट जब वो सिक्योरिटीज उसको वापस कर देगा तो उसको वो डिविडेंड भी रिटर्न करना है. व्हाई? बिकॉज ही इज ओनली एलिजिबल और एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन दोस सिक्योरिटीज, नथिंग एल्स. बट जब तक वो सिक्योरिटीज उसके पास है तब तक वो उसका डिविडेंड्स हो, राइट्स इश्यू हो या वोटिंग राइट्स हो, एवरीथिंग विल बी ऑन द पार्ट ऑफ द बोरोवर. ओके, सो जस्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज मैन्युफैक्चर्ड डिविडेंड. What is manufactured dividend? That is important. तो वही रेपो एग्रीमेंट, he will be eligible to sell those securities. Okay. Okay. Now, what is triplicate SBL? Okay. So triplicate SBL, custodian is providing custodial services to company A, B, and C. Company A has a requirement of Reliance 1000 shares, and company C is having that stock of 1000 Reliance shares. In this case, custodian will become guarantor and no market risk, as custodian knows that both the counterparty, the custodian knows both the counterparty and the who is actually looking out for the Reliance shares. Custodian will be charging the fees from both the sides. तो ये example किस टाइप का हो गया? Credit default swap टाइप का, if you remember. Insurance company था वहाँ पे custodian की जगह, right? So he was company A was looking out for 1000 Reliance shares. So just imagine कि someone is looking out for the funds. Company C के पास वो fund था. Company C provides that particular funds over the SBL contract. In the case of a default, custodian will be taking the care. Okay, so more of like a credit default swap, if you remember. Okay, so this is like a triplicate SBL. So the third party or the third entity will be involving in the transactions. The next is collateral management, is the method of granting, verifying, and giving advice on collateral transactions, so that to reduce the credit risk in unsecured financial transactions. It is legally watertight, valuable liquid property that is pledged. Of course, this is an example, but basically collaterals are done for. Collateral क्या होता है? What is collateral security? If anyone has heard of. That acts as a collateral. Yeah, so that acts as a collateral. Collateral is like in the case of my default, if I am taking a gold loan, say for example, what will be my collaterals in that? Gold ornaments. In the case if I get defaulted, if I'm not able to repay the payments, that gold ornaments will be taken up by the respective banks or something like that. Okay, so just they need to make sure that these transactions are carried out to reduce credit risk in the entire financial transaction process. Collateral can be managed bilaterally or by a third party called tri-party. Bilateral is between two parties, between bank and me, and if it is a third party, we have seen the example of credit default swap. कोई insurance company आ जाएगा
या तो फिर someone who could be their custodians. Okay. Okay, once they are informed of a transaction between the two users, the tri-party agent will select a basket of collaterals from the account of the seller, the contents of which will fall within the eligibility criteria. मतलब content मतलब gold ornaments हुआ यहाँ पे, and he will be collecting the details कि कितने amount का gold ornaments चाहिए to put it as a collateral. So all those activities will be taken, and he will be calculating the fair value. Have you ever seen जहाँ पे बैंक gold loans देती है तो एक ज्वेलर बैठा होता है? Does anyone know? अदरवाइज सी गोल्ड लोन जितनी भी बैंक्स दे रही है, ठीक है, हाउ विल दे जज कि जो ऑर्नामेंट्स लेके आ रहा है वो सही है, of whether they're correct or true, accurate, something like gold ornaments or not. So there has to be one jeweler who is authorized by the banker. He will be first determining कि whether these are true ornaments or not, वरना तो बहुत वो fraud वगैरह होता रहता है, right? Secondly, we have already discussed वो 70% वैल्यू ही काउंट करते हैं, if you remember, right? Why? मेकिंग चार्जेस, कौन सा मेकिंग चार्जेस? गोल्ड ऑर्नामेंट तो ऑर्नामेंट्स ऑलरेडी है, मेकिंग चार्जेस तो जब बना रहे हो तब आएंगे. 70% of the gold ornaments value I am saying that will be authorized as my loan amount. Why 70%? Not just default, even the exchange rate. The price of the gold, say for example, if tomorrow gets reduced, of course by 10,000 or something like that, then bank is going to loss. So बैंक वाले क्या करेंगे, अगर आपने 50,000 का लोन चाहिए तो वो बोलेगा कि you need to have X% of your that particular 30 मतलब 70% of your gold ornaments has to be equal to 50,000. So my original gold ornaments value will be equal to 50,000 divided by 0.7. कितना हो रहा है देखो, 7677 70,000 या something like that. तो 70,000 के आसपास होगा, ठीक है. अगर आपके पास 70,000 के गोल्ड ऑर्नामेंट्स है तब जाके आपको 50,000 का लोन मिलेगा. गेटिंग माय पॉइंट? एंड ऑल्सो दोस गोल्ड ऑर्नामेंट्स विल बी योर कोलैटरल. ओके. Custodian, of course, plays a very important role in the OTC derivative market by providing collateral management services throughout the life cycle. And custodians will have to perform functions such as evaluating the terms of ISDA is, of course, we will be seeing in the subsequent chapters. Check availability of initial and appropriate collateral cover, trigger the default in case of any breach, and coordinating with the credit and risk management teams. So these are the basically roles of the custodian while he is performing the role of a collateral tri-agent. Okay, so he's in between the two transaction parties and he will be ensuring that all the conditions are met, appropriate values of the given collaterals are being measured and thoroughly checked, and only then he will be carrying out the transaction. In the case of a default or any breach, default will be given to the borrower, and finally coordinating with the risk management team. मतलब अगर बैंक का कोई risk management team है तो they will be coordinating with that. Collateral management in SBL कैसे होगा? Wide range of possible collaterals will be cash, government securities, mortgage-backed securities, corporate bonds, letter of credit, equities. So please write all the instruments of collateral management. These are the instruments of collateral management or collateral securities provided in SBL. Okay. Examples, of course.
कोई भी 1 डिजिट 2 डिजिट वाला स्टॉक आइडेंटिफाई करो बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल पे कभी नहीं मिलेगा देखने को। यू रियली वांट टू फाइंड, किसी ने वो मल्टी बैगर किसने डिस्कस किया था कल क्लास में यहाँ पे? हाँ, क्या था वो मल्टी बैगर? व्हाट इज मल्टी बैगर बाय द वे? कल अगर एक्सप्लेन किया ही है तो नॉट नेसेसरी 100%, बट मोर देन 3x 5x 10x होगा। ठीक है, हाँ हाँ, क्या मतलब क्या एक्सप्लेन किया था? व्हाट इज मल्टी बैगर? gives a good amount of data, हाँ that is fine, but उसके अलावा any examples given? कौन सा? अच्छा, शिवा सीमेंट ही दे दिया। ओके, अच्छा एक लिखो CRESSEN क्रेसन करके हैं अभी रिसेंट वन। अच्छा वो दे दिया ना मैंने। ओके, टानला तो निकल गया हाथ से अब तो। टानला निकल गया हाथ से अब तो। अदानी अगर सही चल गया तो आई कैन एक्सपेक्ट 10,000 ऑल्सो इन अदानी एंटरप्राइजेस। बट वही है कि 10,000 मार्केट प्राइस, बट उसका पीई रेशियो देखा है? अदानी ग्रीन एंड समथिंग लाइक 1072 अगर पीई रेशियो है, जस्ट 1072 पीई रेशियो क्या था? ओवर वैल्यूएशन बाय 1000 टाइम्स कंपेयर टू द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, राइट? प्राइस टू अर्निंग्स, जितने अर्निंग होने चाहिए उसके कंपेयर में तो प्राइस भाग रहा है आगे। ऐसा होता नहीं है जनरली, उल्टा होता है। ऑफ कोर्स, जब भी बबल फूटेगा तो वो कुछ हाथ में देके नहीं जाएगा। इट्स अ वेरी बिग बबल इन अदानी ग्रीन। आई डोंट नो कब तक कहां तक ये लोग खींच के जाएंगे। अदानी पोर्ट्स, अदानी गैस एंड अदानी पावर आर रिलायबल कंपनीज, राइट? अदानी गैस का मतलब वो गैस लाइन कनेक्शन हर एक जगह पे आ रहा है धीरे धीरे, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। अदानी पावर स्टिल ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह वो चल रहे, तो वी कैन रिलेट दैट। एंड अदानी पोर्ट्स ऑफ कोर्स दे आर ऑलरेडी हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट्स, एंड नाउअडेज अब तो एयरपोर्ट्स भी लीज पे लेने लगे हैं, राइट? 6 या 8 एयरपोर्ट्स आर बीइंग रन बाय अदानी एयरपोर्ट मैनेजमेंट पूरा। क्रेसन, CRESSEN, SSAN। स्क्रीनर में वो एक हमने डिस्कस किया था ना, स्क्रीनर एप्लीकेशन, राइट? वहां पे जाके चेक करो, आराम से मिल जाएगा। हाँ, क्या हुआ? कोई मल्टी बैगर हो तो हमें भी बताओ। ग्रेविटी इज इनटू इलेक्ट्रिक मेटल। ओके, आशीष काचोलिया डार्क हॉर्स है, मतलब आई विल प्रिफर हिम मोर कंपेयर टू राकेश झुंझुनवाला। नहीं, इतना तो नहीं होता है। वाई? बिकॉज बोथ द लेवल्स यू नेवर नो ये कब भागने लगता है। वही तो मैं बोला, मैं खुद टांडला एट 900 पे घुसा हुआ और 1500 के आस पे निकलने गया था। दैट वाज 600 इज लाइक समथिंग टू थर्ड, सो 60% रिटर्न्स इन शॉर्ट टाइम इज नॉट बैड। बट वही है कि फिर वो ग्रीड नहीं होना चाहिए कि भले ही वो 2000 भी जा सकता है और वापस 2000 से नीचे भी आएगा। ऐसी फॉर एनी स्टॉक ऐसा नहीं है कि वो भाग रहा है तो भागता ही जाएगा। एक बार गिरना स्टार्ट किया तो फिर वो मतलब मौका ही नहीं देगा आपको निकलने के लिए। लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट देना स्टार्ट होगा, तो इट्स नॉट गुड। नो, नहीं, आई विल नॉट गो फॉर पेटीएम। फिर वही तो बोल रहा हूँ, थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस देखो, कंपनी क्या कर रही है, क्या मतलब उनके प्लान्स है, कौन सी प्रोडक्ट्स पे आ रहे हैं। पेटीएम का स्टिल आई डोंट गेट द बिजनेस मॉडल राइट। ओके, बिकॉज सी दे आर कॉम्पिटिंग एवरीवेयर बट दे आर नोवेयर, ऐसा सिचुएशन है। कहाँ पे कोई एक जगह पे तो मार्केट लीडर होना चाहिए ना पेटीएम, बट नाउ गूगल पे, फोन पे आर आल्सो प्रोवाइडिंग सेम सर्विसेज। मतलब जितना भी था तो ये दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वी आर गेटिंग नाउ डिस्ट्रैक्टेड या हम सेटिस्फाइड नहीं है। यू विल बी स्विचिंग डिफरेंट अक्रॉस एनी सर्विसेज। कहीं पे पेटीएम कर दिया, कहीं पे गूगल पे कर दिया, कहीं पे फोन पे कर दिया। आई डोंट थिंक यू आर एवरीवेयर माइंडेड। व्हाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ योर बैंक अकाउंट हर एक जगह पे लिंक्ड है आपका, तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन दैट वे। ओके, बट कौन सा कहाँ से पैसा कमा रहा है वो पता नहीं चल रहा है।
अच्छा तो फोन ये था भारत पे वाला, दे आर स्लोली गेटिंग इनटू दिस बैंकिंग एंड गिविंग लोन्स टू द ये रिटेल शॉप वेंडर्स। तो उनको वो मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स देने वाले थे 50,000 या 1 लाख टाइप का, मैक्सिमम 5 लाख डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस या जो भी आपका स्टोर साइज है वगैरह। और स्लोली स्लोली दे वर गोइंग टू गेट अ बैंकिंग लाइसेंस। लेकिन वही है कि अब ये जो वॉर स्टार्ट हो गया है इंटरनली, तो आई डोंट नो लाइक दे आर गोइंग फॉर इट और नॉट। Okay. Stock borrowing lending fees and rebate rate. Now, these fees are paid by the borrower to the lender and it varies according to the nature of the securities lent. Other factors include credit worthiness of borrower, duration of the loan, and the type of the collateral that will be used will also affect the fee. The lender who receives cash collateral from the borrower will reinvest it. He will earn spread between reinvestment rate and the agreed rebate rate. So basically, sometimes fees will also be included by the lender to the borrower. The borrower has to pay the fees that will be charged for taking the securities. Okay. Lender and intermediaries, of course, one and the same. Transactions are extremely complex and involve narrow margins. Specialized agents will be like more of like investment bankings if they are at a very larger level and know how need to conduct SBL operations and then leverage their instruments if they are required. The common agents can be asset managers, custodian banks, and specialized third-party agents. So lenders and intermediaries will be those who will be trying to match the requirements of the borrower as well as the lender. मतलब वो बहुत सारे ट्रांजेक्शन से हमने ऑलरेडी देख रखा है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो या फिक्स्ड इनकम पे हो, एवरीवेयर मोस्ट ऑफ देयर विल बी एसेट मैनेजर्स या फंड मैनेजर्स या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। borrowers who are borrowing the securities to cover a short position, naked shorting अगर उन्होंने किया हुआ है तो वो borrow करेंगे। naked shorting is the short selling, okay, short कर रहा हूं तो short selling होता है of securities without any corresponding long position. Market makers need to be able to borrow securities to execute buy orders and support of financial transactions if required. What are the benefits specifically? It will increase the liquidity of the security market. अगर जो सेलर था सिक्योरिटी का उसके पास पैसा नहीं था, फंड वगैरह नहीं था, तो जो बाई कर रहा है जब मार्केट में, तो ऑफ कोर्स ही इज गोइंग टू डिप्लॉय हिज लिक्विडिटी इनटू द मार्केट. सेकंड, सपोर्टिंग मैनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज व्हिच वुड अदरवाइज विल बी डिफिकल्ट. अगर लॉन्ग स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल या शॉर्टिंग वगैरह का, शॉर्टिंग में हमने ऑलरेडी देखा था बहुत मार्जिन चाहिए, राइट. इफ यू आर ओनली डूइंग नेकेड शॉर्टिंग, हेज कर देते हैं तो देन वी विल नीड वेरी लेसर मार्जिन, राइट. पहले 1.5 लाख या 2 लाख जितना मार्जिन चाहिए होता है, अगर हेज कर देते तो 20-30 हजार चाहिए होता है. So in that case also we are going to have support many transactions, allow investors to earn income by lending their securities to the third parties and facilitate the hedging and arbitraging of price differentiations. So basically stock borrowing या lending तब करेंगे जब जो खुद सिक्योरिटी होल्डर है उसको भी शॉर्ट का बेनिफिट अगर उसको अगर चाहिए मार्केट में, तब अदरवाइज इज नॉट रिक्वायर्ड. And finally, disadvantages, of course, market risk, counterparty risk, and high fees. Market risk will be volatility, counterparty risk default associated with them, and high fees will be if the fees are too much high, by then of course borrower can deny कि इतना high fees मैं नहीं pay करूँगा. So how is stock lending then different from repo? Both are similar. स्टॉक लैंडिंग में एक ही चीज है कि वो चार्ज करेगा फी, जो रेपो में फीस वगैरह चार्ज नहीं करते थे, इफ यू रिमेंबर. इन सिक्योरिटीज लेंडिंग मार्केट इट्स इक्विटीज एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन रेपो में क्या था, बॉन्ड्स एंड अदर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, इफ यू रिमेंबर, राइट. सो यहाँ पे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट्स. सो जस्ट राइट द डिफरेंसेस बिटवीन स्टॉक लेंडिंग एंड रेपो, दिस इज इंपॉर्टेंट. एक साइड पे फीस है, सेकंड साइड में फीस नहीं है. सेकंड में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है, वहां पे डेट इंस्ट्रूमेंट्स है. दैट्स इट.
You can even keep this Renuka sugars on the list. Renuka sugar अगर सही चल गया तो 60 से it is potential to 600. Okay. शुगर स्टॉक्स का क्या है कि काफी टाइम से रीवैल्यूएशन नहीं हुआ है. Revaluation is like something when the entire sector gets re-evaluated by the investors. तो जब उसका डिमांड जब ज्यादा आएगा तो आई थिंक शुगर स्टॉक्स विल फायर probably if the ethanol requirement increases. So what are the reasons for SBL? Just write short selling, hedging and arbitrage. Okay, just reason for short selling अगर question है तो you can just answer this and explain anyone. The selling of a stock that seller is not owning, and short sell is the sale of the security that isn't owned by the seller but that is promised to be delivered. If a trader has sold the securities, it must borrow those securities to fulfill the settlement obligation. Good. Okay. So stock borrow lending will be dealing with securities like equity and money market instruments also. This will be applicable in paid, but repo deals with only fixed income securities, and in this case, interest will be paid. Okay, यहाँ पे fees होगा, but along with that, sometimes interest will also be paid, but fees will be charged to the borrower in this case. Okay, that's the only difference. So we are done with stock lending borrowing. छोटा सा ही chapter था, और इसमें कुछ है नहीं, just lending borrowing हो रहा है, but you need to understand the difference between SLB and repo agreement, not repo rate. Okay, then we are done with this, and then we are starting with reference data management. Okay, another theoretical chapter. Pure, इसमें तो बस प्योर, अगर मैं बोलूँ तो एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही काम है, नन अदर एप्लीकेशंस, और एक ट्रांजैक्शन जो आपको करना होता है. तो बेसिकली रेफरेंस डेटा मैनेजमेंट ओवरव्यू दे देता हूँ. वी कैन टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक एंड वी विल गेट बैक टू इट. तो अगर हो जाता है तो ये आज खत्म कर देंगे. बेसिकली इसमें क्या होगा, व्हेनेवर आई एम डूइंग एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, तो मैंने वो एक बताया था बारकोड होता है, इफ यू रिमेंबर. तो यहाँ पे भी देयर विल बी डिफरेंट numbers associated with your transactions that will identify कौन सा country है, कौन सा security है, कौन सा उसका कोड है. Accordingly you need to just match. लेकिन उसके लिए है 15 पेज का थियरी. In nutshell I am telling one line. Okay, चलो have a break and we will gather at 11:30. जल्दी आ जाना तो इसको जल्दी खत्म कर देते हैं. क्या हुआ, बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो हाँ आज जल्दी खत्म. अच्छा नहीं, अरे नहीं, हाँ
अरे नहीं, मैं बाद में आता हूँ, आप खत्म कर दो, मुझे ऑफिस में काम है थोड़ा। ठीक है। प्रज्ञा, आर यू देयर ऑनलाइन? हेलो। हाँ हाँ प्रज्ञा, कैन यू प्लीज कॉल आरती, उनको कुछ काम है आपका, प्लीज डू इट नाउ। हाँ हाँ। ओके, चलो। हाँ, कल मॉक है आपका। होगा तो आफ्टर 2 PM, दैट्स फॉर श्योर। उससे पहले नहीं होगा। कोई भी स्लॉट आपको आज मेल आ जाएगा बिटवीन 2 to 6।